Yes, good morning to everybody. So, as discussed on my last lecture about specific relief act, continuing further, so we were talking about factors which were making the sense of the contract. So here, when I was talking about the factors which make time a sense of contract, hold on, let me, yeah, good morning. So, yesterday we were talking about the factors which make time a sense of the contract. So, when I talk about the factors which make time a sense of the contract, so I told you that what are those factors when time is the sense of the contract. So this is first where the parties now always remember specific relief act and contract. Normal remedy was earlier normal remedy was only damages. So by way of specific relief act, we have brought it in the purview of summary remedy, especially in immovable properties. Because as I told you in my first lecture, specific means speci, that you want the performance of the contract exactly the way it was mentioned in the contract. Let us say that A wants B to perform some contract. So he will exactly want him to perform that contract. I'm not talking about impossibility of performance here right now. I'm just generally telling you that when we talk about specifically fact, we always want that act has to be done in that specified mode which has been defined in the contract between the parties. That is why the specific relief act has been enforced. And reason was because now this amendment of 2018. Now many of you must be thinking, sir, what was the need of this amendment? The need of this amendment was that earlier in specific relief act before amendment there was discretion of the court, that it is upon the court to decide, okay, whether to give specific performance of a particular contract or to award damages. But but you will see with passage of time, if you read more judgments about that, that specific relief act was generally granted as by way of damages. That is why this amendment was needed, because that discretion has been now taken. Now it is one of the mandates that it has to be that the contract has to be performed specifically, because otherwise there is no point of enacting this new enactment, which was of specific effect after partition. So now, in my last lecture, I was telling you what are the factors which make time as a sense of contract. So if you recollect, those factors were where the parties have expressly agreed to treat it as the sense of the contract. So if there is particular stipulation, now whatever terms are written in the contract, we call it covenants, right? What we call it? Covenants. So when I talk about covenants, when I discuss Transfer Property Act with you, there are basically normally you say four heads are there in Transfer Property Act. One is sale, second one is lease, third is mortgage, then we have gift. So these are normally four heads. Charge is also there. So when we do a sale deed, what is a sale deed? If anybody sells a property, there has to be a sale deed, right? That is a document required by law. Now, in sale deed, whatever terms are written, we call it covenant. Similarly, when you give your property on lease, or maybe I call it as on rent, then also you will say that the terms of the lease will be written in the lease deed, and that will be called as all those stipulations which are writing in the lease deed will be called as covenants. Similarly, with the mortgage deed and gift deed. So that aspect I will discuss when we'll be doing the transfer property act. So right now you have to remember few things, that what are the factors which makes time as a sense of the thing. First factor is where the parties have expressly agreed to treat it as of the sense of the contract. Second, where delay operates as an injury.
then it is written in the contract. If the delay is there, then there is a injury clause to it. Third, where the nature and necessity of the contract requires it to be so construed. For example, where a party asks for extension of time of performance. So, yeah. So, I again repeat, where nature and necessity of the contract requires it to be so construed. For example, where a party asks for extension of time for performance. So these are the factors which make time as a sense of the contract. So there is a landmark judgment of Supreme Court also. You can note that judgment. The name of the judgment is, I'm writing on in the chat box. So yeah, the name of the judgment is DS Thimmappa versus Siddha Amata. Now this is 1996, right? It is an AIR and it is Supreme Court. Citation, you can write on the citation also. AIR means All India Reporter, 1996 year, Supreme Court, and the page is 1960. Okay, so you can see it. I have written in the chat box. Now, moving further here, that examples. Now, examples are like business and commercial contract. Obviously, time is the stipulation, and it has to be made. If you have a tender now, lot of disputes arise. See, when government, like, let us, I witnessed a case. For example, Jalandhar city, they wanted to build up a stadium, right? So when government is doing these kind of things, practically how they carry out this, they do it by way of tender. What? By way of tender. So all these public entities, even private entities, uh, they always publish a tender in the newspaper. Okay? And there is a lot of litigation in the High Court and Supreme Court regarding tenders. Especially in our High Court, this tender matters are listed with Honorable Chief Justice of our court along. So it is in his court, right? So tender matters, see, lot of disputes rise. So so I'm telling you practically how these contracts are, what are the basic practical uh, aspects which you should remember. So what happens, like, let us say Jalandhar city, they want to make a stadium, right? So there is another public uh, entity in Jalandhar. In every town it is. Let us say the Improvement Trust, right? So Jalandhar Improvement Trust, uh, in the newspaper, they publish a tender. So tender will say this and this uh, thing, because they will write what all they want, right? So they will write that stadium is to be built. This is the time period. This is the time period, and they will invite the quotations. What will be the expenditures for opening up for making up a stadium in Jalandhar. So what will happen then? Many companies, because it is not only one company, construction company, who's doing the job. So in these kind of tenders, lot of companies will participate. Okay, ये भी हो सकता है कि foreign companies are also coming because it is a large project. Then they will give their quote. Okay, then after giving a quote, what will happen? Bid will be there. So L1, L2, L3. So the person whose bid is the most favorable, that will be accepted in the tender, and eventually he will be given a tender. Now remember, the stipulations are mentioned in the tender that you have to make a stadium in 1 year or 2. And if that fellow fails to do it, what will happen? Sir, uski jo money hai, because whenever any tender is granted, normally all these big companies or government companies, like in this example, it is Jalandhar Improvement Trust, and they wanted to build up a stadium. So they will say, ki, ji, aap aise karo, the project is, let us say, for 1,000 crore, right? They will say, whoever, they will put up a they will put up a condition that the company who will be eventually allotted the tender will give us guarantee. Guarantee, let us say, for 1,000 crore का प्रोजेक्ट है, for 5 CR. So 5 CR भाई उस कंपनी को पहले देना पड़ेगा.
And eventually, if that company fails to perform within 1 year, what will happen? They will forfeit the tender. Yes. And then the litigation starts, So that is why I told you tender matters are very, very important aspect of law area, and lot of writs are there in the High Court. I've also opportunity of handling tender matters. So this is how the stipulation in the contract in it is made. So moving further, uh, now I will be just we are having a general discussion, right? So then we'll be going section by section, which are all important sections I'll be discussing with you. But overall scenario of specific relief act you should know before reading the Bear Act because it is very important. I assume you have read the Bear Act, right? Because when you read any law, first things is first, even if you don't know ABC of law, you should read the Bear Act and then try to interpret. My part will be to help you in understanding law better. So when I talk about contracts relating to immovable property, here also I will talk about now we are discussing the time as a sense of contract. So when I talk about contracts relating to immovable property, see the normal remedy was damages in Indian Contract Act and specific relief act came because the whole purpose was in general, as I just told you a few minutes back, that even in specific relief act unamended, normally the courts had a discretion and normally damages were being given. So eventually lot of hue and cry was there and everybody said that if specific relief act is there, we need a relief. We want that contract to happen the same way we stipulated it, right? So then here in these cases, it should be remembered that it was needed. See, the reasons are very fair. For example, uh, like if the parties themselves have intention to perform the contract, they write it in the contract itself that like the tender example I have given you. Let us say another example, commercial transactions. Obviously, they has to somebody has to do a commercial transaction that has to be time bound, right? Especially in case of urban immovable property. Now, when I will be discussing Transfer Property Act, you will see a lot of litigation is there in the courts regarding agreement to sell because time is the essence of the contract. Whenever you buy a urban immovable property, you know there is normally agreement to sell. What is agreement to sell? I assume all of you know, right? So before sale, normally there is agreement to sell, but that is not the law that only agreement to has to sell has to be in existence before going to say no. If you are 100, let us say example, the property is for fun once a year. So what is agreement to sell? You give normally it is a custom 25% उसका आपने अमाउंट देके एग्रीमेंट टू सेल करना है. उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा सेलर से कि भी 3 महीने के अंदर आपने रजिस्टर्ड सेल डीड कर. बट व्हाट इफ you as a buyer have all the money with you once year आपके पास पड़ा, then why will you go for agreement to sell? सबसे बेस्ट मोड क्या, सीधा जाओ रजिस्ट्री कराओ स्यापा मुक्या, ठीक है ना. एग्रीमेंट तो आप सेल कर दोगे, कल को वो बंदा सेलर किसी और को बेच देगा, है ना. आपकी पेमेंट डिले हो जाएगी, क्या होगा? लिटिगेशन विल स्टार्ट. लॉट ऑफ लिटिगेशन इज पॉपिंग अप एंड दिस इज वन ऑफ द लिटिगेशन which will come across when you become what will you become as a civil judge junior division in the civil side and magistrate first class in the criminals. So इसके अंदर बड़ा important case है. I'm writing down the case in the chat box. I hope I am audible to you all. Yes, Bhavna and Muskan. Yes, sir. So Citadel, fine. And I guys tell you, whatever you do in life, especially with law, I also prepare my cases, and I always go revise it in the early morning. This is the best time of sanity, time of discipline, and people who get up at this time, I can guarantee you, this 1 hour or 2 hours of your are equivalent to 7 hours of the day. So make this habit, and I will be also wanting volunteers so that you can help each other. You can, things are very easy nowadays with Zoom videos, but still. So this is a very important case. Citadel Fine Pharmaceuticals versus Ramaniyam Real Estate. Many candidates are messaging me, sir, timings and timings. I said, timings, these are perfect timings. You can, and
I don't see any reason of not. I can, kabhi we can have a late session, no issues on holiday maybe. But this is in a best time. So this is a very important case of 2011. I have mentioned this case. इसके अंदर equity की हम बात करते हैं. So I told you that in India, civil courts are also court of equity, and you always remember the principles of equity, because without remembering the principles of equity, you can't learn Transfer Property Act, you can't learn Specific Relief Act, you can't learn Sales of Goods Act, you can't learn Contract Act, you can't learn Registration Act, you can't learn Limitation Act. Why? Equity principles are very important. What are equity principles? I assume all of you know. I'll not be reiterating on that. So ये judgment is very important. ठीक है, इसको आपने go through हो, अगर आपको कोई difficulty हो, so you should always you should always come and tell me, and I'll help you out with this. So I give you some more examples. Let us say seller sold immovable property for meeting his business needs or to repay his loan, or let us say आज के जमाने में उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, खर्चा बड़ा हो रहा है, उसने अपने एक्सपेंसेस के लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है, ठीक है, और लेटर से उसने अपने बच्चों को बाहर भेजना है एजुकेशन के लिए, आज के लिए भी ट्रेंड है ना ट्रेंड, कुछ ना करो बच्चे को बाहर भेज दो और वो बच्चा बेचारा 2 साल पैसे खराब करेगा और वापस आ जाएगा, क्योंकि जॉब्स आर नॉट एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो न्यू ट्रेंड, ठीक है ना, इसको भी हम आजकल ना सोसाइटी स्टेटस के टैग के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है, सो डोंट माइंड, बट दिस इज द रियलिटी वी आर फेसिंग. आई हैव सीन सीएस, लॉट ऑफ लॉयर्स गोइंग, कुछ वापस आ जाएंगे 50 लाख 60 लाख खराब करके आ गए, ठीक है, क्यों? सोशल स्टेटस चाहिए, बच्चा बाहर से पढ़ के आया है, वैसे क्या है, नीलबट्टा से नाता, सो ऑलवेज गो ऑन मेरिट. अच्छा, or when you want to, let us say, you want small house आपके पास, you want to make a bigger house, you, that is why आपका जो यूनिट था आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है, so these are the examples, right, when I talk about the practical aspects. अब उसी उसी केस के अंदर when I talk about buyer, so buyer must be purchasing land for commercial transaction. क्यों? उसको कुछ डेवलप करना है, अपना कोई, लेटर से वो बिल्डर है, उसने रेजिडेंस अपार्टमेंट्स बनाने हैं कमर्शियल यूज के लिए, उसको यूज करना. सो दिस इज हाउ वी नीड, एंड दिस इज नाउ हाउ वी मेक श्योर दैट our needs are met. That is why specific relief act comes into force, right? So we will also discuss when we do specific relief act what are the cases of subsequent purchaser, right? So there are two aspects: subsequent purchaser before the start of litigation, and subsequent purchaser after the start of after litigation. So these are the factors. So whenever talk about subsequent purchaser before the start of litigation, now here I will be just telling you something regarding transfer property. Why I am discussing all this? Because these basic concepts you should understand before reading specific, right? So when I talk about subsequent purchaser before the start of the litigation, my fellow colleagues, you will read section. कौन सा section पढ़ोगे? Anybody has an idea? Yes, Muskan? Beta. Yes, Bhavna? Any idea? You will read section 40 of transfer property. Okay? You can see the chat box? Yes, sir. Section 40, if you see the Bare Act, so it says where a third person is entitled to the benefit of an obligation arising out of a contract and annexed to the ownership of immovable property, but not amounting to an interest therein or easement thereof. Now, what is easement? easement का भी एक स्टेच्यू है, ठीक है ना. जब मैं easement की बात करता हूँ, आई थिंक यू मस्ट बी रिमेम्बर, दो तरह की easements होती है. किसी को याद है? यस. Dominant easement, servient easement. Have you heard these terms? No, sir. तो बेटा ईजमेंट क्या होती है, पहले तो मैं इस पर एलेबोरेट करता हूँ. ईजमेंट राइट्स होते हैं आपके, ठीक है. जैसे आपका घर बना हुआ है, ठीक है, आपकी सिटी के अंदर, और नेबर ने क्या किया, इतनी बड़ी वॉल कर दी कि आपकी सनलाइट रोक दी है. तो ये क्या है? ये आपका ईजमेंट राइट है. आप कोर्ट में जाके इसको
वैलिड करवा सकते हो, बिकॉज नो बडी हैज अ राइट टू कर्ब योर एयर लाइट पैसेज। ठीक है, अब जैसे कॉमन पैसेज है, ठीक है, तो ये नहीं कि साथ वाला उसको ब्लॉक करके बैठ जाएगा, नो, बिकॉज दीज आर द ईजमेंट राइट्स and they go with the property. There are two kinds of rights, is servient and heritage and dominant heritage. I'll touch this easement if required because eventually it will be helpful to you. So basically, right now you have to focus. Yeah, when I talk about Section 40, I'm not talking about the easement here, right? So I'm only talking about such right or obligation which may be enforced against a transferee with the notice thereof gratuitous transfer of these properties affected thereby. आप एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसकी छोटी सी, इसकी इलिस्ट्रेशन ही दी हुई है, इसके अंदर लिखा हुआ है ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल लेट अस से सुल्तानपुर टू बी, while the contract is still in force he sells सुल्तानपुर टू सी। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको सुल्तानपुर बेचूंगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल हो गया, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट था ऑलरेडी उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल था, सेलर ने क्या किया, सी के साथ बेच दिया, ठीक है, सी को बेच दिया। हु हैज नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो बायर है वो क्या करेगा, ही मे फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट सी टू द सेम एक्सटेंट एज ए, राइट, बिकॉज थर्ड पार्टी आ गई ना। अब अब इसके अंदर जब लिटिगेशन चलेगी, ऑब्वियसली लिटिगेशन चलेगी, बायर ने सेलर ने तो मेरे साथ एग्रीमेंट किया था, इसने सी को बेच दिया। अब लिटिगेशन क्यों चलेगी, मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल हुआ था। सो मेरा मैं क्या करूंगा, मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगा, मैं स्पेसिफिक लीव का केस डालूंगा, मैं बोलूंगा जी देखो मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल है, इसके अंदर सारे टर्म्स लिखी हुई हैं, इस बंदे ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की, सेल डीड करने के बजाय बी को उसको बेच दिया, तो आई हैव टू मेक, सो इसके अंदर मेरे को सी को पार्टी बनाना पड़ेगा, यस और नो। अब सी थर्ड पार्टी, आई हैव टू मेक Yes. हिम पार्टी, यस और नो। यस भावना एंड मुस्कान, No. व्हाई No. नो, व्हाई नो। बेटा अगर मैं सी को पार्टी नहीं बनाऊंगा तो मेरे को रिलीफ कैसे मिलेगा, बिकॉज प्रॉपर्टी जो ओनर था, ओरिजिनल ओनर था, उसकी जगह कौन आ गया, सी आ गया। अब मेरे को अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट में सी को पार्टी बनाना पड़ेगा, दैट इज व्हाई देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ नेसेसरी पार्टी इन सीक्वेंस। अगर भावना मैं सी को पार्टी नहीं बनाऊंगा तो मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे मिल जाएगा। और इस केस के अंदर सी को पता था कि ओरिजिनली मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल है, वो इसके अंदर एक्सक्यूज भी नहीं ले सकता एज अ बोनाफाइड परचेजर। अब बोनाफाइड परचेजर कहाँ डिफाइंड है, इसका एक सेक्शन है, वो सेक्शन कहाँ है, वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी के एक्ट के अंदर दिया हुआ। सो यू गेटिंग इट भावना, दैट व्हेन in this example the property was taken by the third party and I have to make him a party for the litigation, अगर मैं कोर्ट में उसको पार्टी नहीं बनाऊंगा तो मेरे को रिलीफ कहाँ से मिल जाएगा। यू गेटिंग इट, समझ आया, Yes, sir. मुस्कान, क्लियर। Yes, sir. यस, नाउ उसी तरह सेक्शन 91 भी आता है जब हम इसकी बात करते हैं, सेक्शन 91 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट। सो व्हाट सेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, सेक्शन 91 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। सेक्शन 91 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट क्या बोलता है, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद नोटिस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। So it says where a person acquires property with notice that another person has entered into an existing contract affecting the property, or which specific performance could be enforced, the former must hold that property for the benefit of the later to the extent necessary to give effect to the contract. So this stipulation is also mentioned in section 91 of the Indian Trust Act जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद मैं आपसे एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा जिसको मैं नॉर्मली सेक्शन 52 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बोलते हैं, जिसके अंदर हम एक फेमस सी लैटिन फ्रेजेस यूज किए हुए हैं लॉ के अंदर, बिकॉज मोस्टली लॉ इज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। सो आपने सेक्शन 52 पढ़ा होगा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, जिसका नाम, जिसको हम बोलते हैं पेन पेंडेंट लिटे ट्रांसफरी, पेंडेंट लिटे ट्रांसफरी, हैव यू हर्ड दिस टर्म। सो सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पहले उसको पढ़ो। सेक्शन 52 ऑफ द बोलता है कि
which says, it says, I will read it for you. Section 52 Transfer Property Act pending suit relates thereto. So it says, during the pendency in any court, having authority within the limits of Indian or established beyond such limits by central government of any suit or proceeding, which is not collusive and in which any right of immovable property is directly and specifically in question, the property cannot be transferred or otherwise dealt by any party to the suit or proceeding so as to affect the rights of any other party thereto under any decree or order which may be made therein, except under the authority of the court and on such terms as it imposed. तो सेक्शन 52 बोलता है कि जब आपका एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो उसके अंदर उसके अंदर आप अगर किसी और को बेच दोगे तो ऑब्वियसली पहली चीज कोर्ट ने देखना है वो क्लूसिव नहीं, क्लूसिव का मतलब होता है कई बार ना जानबूझ के लोग करते हैं कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लुकाने के लिए, एक के साथ किया एग्रीमेंट सेल करने का, साथ में सी को बेच दिया, मे बी की स्टैम्प ड्यूटी कम लगे हैं, दे हैव देयर ओन हिडन पर्पसेस कि हाँ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शो कर देंगे कि मेरा देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करोगे तो आपको पता है ना अर्नेस्ट मनी देते हैं हम, जब एग्रीमेंट टू सेल करते हैं हम उसको बयाना देते हैं, बयाना मींस अर्नेस्ट मनी। तो प्रॉपर्टी आपकी लगता है से 1 करोड़ की, आपने मेरे को 25 लाख बयाना दिया, सो अगर आप वो फुलफिल नहीं करोगे क्या हुआ, 25 लाख आपका गया, गया ना। सो सम पीपल ट्राई टू सी को बुला लेंगे, चल यार हम किसी तरीके ना, सपोज करो किसी किसी को कोई somebody wanted to have the preferential right कि हाँ भी इसको हमने पैसे देने हैं, वो कहता है भाई ठीक है मैं तेरे को पैसे देता हूँ प्रॉपर्टी बेच के, तो वो शो करेगा मैंने तो ए को बेची थी, मेरा दवाला निकल उससे पैसे नहीं हुए मेरे से अरेंज, अब इसलिए मेरा बयाना कैंसिल हो गया, उससे वो 25 लाख भी चले गए उसके, नो। सो दिस इज कॉल्ड अ collusive decree where all the parties in hand in glove with each other, they're trying to do cheating with the court, so this is called a collusive decree. So section 52 is very clear कि आप अपना इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफर कर सकते, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। सो अगर कोई बंदा किसी को बेचेगा तो ऑब्वियसली उसको हम पार्टी तो बनाएंगे बनाएंगे, एंड उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है लॉ के अंदर कि हाँ भी वो बोलेगी जी नहीं 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 यू कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी टू मी एंड ऑल, मतलब यू कैन नॉट चैलेंज मी इन द कोर्ट, यू कैन चैलेंज इन द कोर्ट। इसके अंदर व्हेन आई डू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आई विल आल्सो डिस्कस विद यू व्हाट आर द राइट्स ऑफ बोनाफाइडी परचेजर। कई लोग ऐसे भी होते हैं थर्ड पार्टी, बोलेंगे जी हमें तो पता नहीं। इसके अंदर ये ना बड़ी नॉर्मल एक्सक्यूज है, इसके अंदर व्हाट वी हाउ वी फाइंड आउट, यू विल फाइंड आउट व्हेन एज लॉयर्स एज लॉ स्टूडेंट्स एज जजेस, हम सबसे पहले ना जब हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट करेंगे उसके अंदर हम राइट्स ऑफ सेलर एंड बायर भी करेंगे। तो ये नहीं है कि बायर आंखें बंद करके प्रॉपर्टी लेता है, भाई बायर इज हैज ओनर्स, उसका टाइटल चेक करेगा। आपको क्या लगता है आप 1 रुपया भी दे दोगे किसी को बिना चेक किए, इसको हम बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस। उसके अंदर बायर के राइट्स होते हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आप क्या करो, हर दुनिया में हर ऑल द कंट्रीज यूके यूएस में क्या करते हैं, लॉयर्स का क्या काम होता है, लॉयर्स का देखो आप एक अच्छा लॉयर हायर करोगे, है ना, अगर लॉयर नहीं हायर करना ही पड़ेगा आपको, फिर कोई बंदा वो आगे ऐसा बंदा हायर करेगा जो उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड पड़ा, सपोज करो चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी, चंडीगढ़ का रिकॉर्ड सारा कहाँ पड़ा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पड़ा है। आप एक बंदा भेजोगे इंस्पेक्शन के लिए भेजोगे, उसका सारा रिकॉर्ड, कब से वो प्रॉपर्टी अलॉट हुई थी, क्या वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई है आज तक, क्या वो किसी बैंक के पास है प्रॉपर्टी, क्या उसके ऊपर कोई इनकम्बरेंस तो नहीं है, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, कोई उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है। तो भैया मैं तभी पैसे दूंगा ना जब ये सारे फैक्टर सेटिस्फाइड हो जाएंगे, बिना सोचे समझे मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, आई मीन एंड दैट इज हाउ द फ्रॉड्स हैपन। सपोज करो जी बेंगलोर के अंदर लोगों ने प्रॉपर्टी लगा दी जी है, नॉर्थ इंडियंस ने, वो जाके आपने पता ही नहीं किया उसका टाइटल, बाद में पता चला जी फ्रॉड हो गया आपके साथ। सो देखो ये चीजें ना लेम एक्सक्यूजेस नहीं चलती, दैट इज व्हाई आई से एक्सक्यूज ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जब भी आप प्रॉपर्टी ले खरीदोगे एज अ बायर, आपके राइट्स डिफाइंड एंड ट्रांसफर करते हैं, आंखें बंद करके नहीं लेनी प्रॉपर्टी, आपने उसका टाइटल चेक करना है, हाँ यार वो फ्री फ्रॉम टाइटल है, किसी के पास गिरवी तो नहीं रखी हुई, इट वाज नॉट मॉर्टगेज्ड, या वो प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, क्या पता वो गवर्नमेंट ने एक्वायर तो नहीं कर ली, क्या पता उसने किसी और को तो नहीं बेच दी। तो आप ये सारी ड्यू डिलीजेंस करोगे, और वो जो लोग नहीं करते दैट इज व्हाई दिस डिस्प्यूट्स। सो दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस आई हैव गिवन यू, ठीक है, इट्स अ $1 million एडवाइस। सो फिर अब ये जनरल आउटलुक्स मैंने, जनरल एस्पेक्ट्स मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट एनैक्टमेंट्स के भी बताया।
अब हम जब हम when we I am coming back to specific performance act now, so I will tell you कि specific performance जैसे section 10 है, वो cases उसमें specific mention है in which cases specific performance of contract is enforceable. ठीक है, उसके अंदर exception मैंने कल भी बताई थी, 3 exception है उसके अंदर. कौन सी 3 exceptions है? मैंने 11(2) के बारे में बताया था, section 14 के बारे में बताया था and section 16 के बारे में बताया था. ठीक है, now बाकी सारे now section 10 is very very important because it tells you in which cases specific performance of contract is enforceable. और उसके बाद ये जो exceptions हैं, this when we discuss exceptions I will discuss chapter by step chapter with you on important sections with you along with the exceptions. So right now you have to understand one thing, that specific performance has been amended. So why it was amended? It was amended because earlier only damages was being given. Now courts have taken note of it and they want nahi damages se nahi baat banegi ji. We have to give them the we have to give them the exact relief which they are wanting in the court of law. So is it all clear to you guys till this? Yes or no? Yes. Yes, sir. अब मैं आपको फिर से before touching the sections I will now simply highlight what all important aspects were there when this amendment was made, right? So first of all, you have to remember that specific performance of act. Now, I have told you before the amendment, general rule was that discretion of the court is there. Okay? Now this, I am emphasizing on specific relief act amendment again and again because here also क्वेश्चन मेंस में आया था. इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया जी अमेंडमेंट के इफेक्ट्स क्या. देखो इतने इजी क्वेश्चन है ना, ये आने नहीं चाहिए लॉ के आपके एग्जाम लेवल पर. यू सी दिल्ली जुडिशरी प्रेपोजिशन आएगी. ठीक है, पंजाब हरियाणा वाले थोड़े से देखो ये ना थ्योरेटिकल नहीं. जब आप लोग कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे आपको बाय वे ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आएगा. ठीक है, कल को सपोज करो पूरे इंडिया का जुडिशरी एग्जाम शुरू हो गया या कल को आपने एडीए का एग्जाम कुछ देना है, सो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, राइट? So when I talk about the main effects of the amendment, so you remember that earlier discretion of the court was being exercised generally. So normally damages ही grant होते थे, despite specific defect was in existence. But now that has been changed, amended. Now court say कि immovable properties के अंदर specific performance will be granted. And exceptions I have told you 11(2), section 14 and section 16. ठीक है? So now when you see section 10, it has been amended. Okay, na? Now it means that specific. Now when I talk about, acha, now remember, when I talk about property, now always remember the section 10. Now normally specific performance is not given in movable properties. A general rule. Okay? It's a general rule. Okay? No doubt in section 10 they have also amended the section because specific performance in case of contracts, right? So as a general rule, you should remember that movable properties के अंदर specific performance is not already granted. उसके भी circumstances हैं, कहाँ वो possible है. Suppose करो आपके पास एक antique gift पड़ा हुआ है, आपकी फैमिली जी पुरानी फैमिली थी, है ना, पार्टीशन से पहले लेटेस्ट हो, आपको कोई खिताब दिया हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, है, तो कोई आपको कोई दे बुजुर्गों को किसी चीज से नवाजा गया था. So that article, let us say there is a sword and that is 150 years old. So it is antique, having antique value. Then in that case, specific performances will be required. ठीक है? Normally movable properties के अंदर general rule के अंदर specific performance, it's a rule. Normally damages is being given, right? So now when I talk about this amendment, I have told you about section 10. ठीक है? Similarly, you should also remember that there is section 20. Earlier there was, what before amendment, section 20 gaya tha, discretion was given to the court regarding specific performance, right? So now with the help of with the amendment, now it takes away the discretion to the extent. Okay? So these are the factors. Acha, readiness and willingness ये हम discuss करेंगे. बड़ा important part है specific effect का, because whenever you have a dispute of specific effect, readiness and willingness has to be shown from day one. Let us suppose A and B are two parties. ठीक है, और B ने जी, B is the buyer and A is the seller. अब इनका dispute पड़ गया. Dispute तो
मैंने एग्जांपल, इसको एग्जांपल ना बड़ा इजी है, आपको भी मैंने बताया। डिस्प्यूट पड़ेगा, ए ने बी को सेल करनी थी प्रॉपर्टी, ए एग्रीमेंट टू सेल किया, उसके अंदर डेट लिखी जी प्रॉपर्टी विल बी डन ऑन 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को बायर गया लेने के लिए, ए आया, डिस्प्यूट पड़ गया ना, बिकॉज उसको प्रॉपर्टी ऐसे तो मिल नहीं जाएगी घर बैठे आ जाएगी, उसको क्या करना पड़ेगा, सेल डीड जाके रजिस्टर करानी पड़ेगी। सेल डीड कौन रजिस्टर करता है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट करेगा, है ना, तहसीलदार करेगा। ठीक है। सो आपके एक्ट्स के अंदर यू शुड नो हु इज एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट। ठीक है। एग्जेक्टिव ऑफिसर, नैब तहसीलदार एंड ऑल दैट। सो रेवेन्यू ऑफिसर्स आ जाते हैं। तो वहां जाके वो गया। अब ये नहीं है कि, अब ये देखो इक्विटी यहाँ कम्स, whoever comes to the court come with clean hands। ठीक है। वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। मैं बायर हूं ना, मुझे पता है 20 दिसंबर को सेल डीड होनी है, मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा चंडीगढ़ सेक्टर 17 में तहसीलदार के ऑफिस में जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं तो आ गया ये रजिस्ट्री करवाने। अब सेलर नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, एविडेंस क्रिएट करूंगा ना, एविडेंस क्रिएट को पता लिटिगेशन पढ़नी है, क्या एविडेंस क्रिएट करूंगा, वहां जाके अपनी हाजिरी लगवाऊंगा। यस और नो? अगर मैं हाजिरी नहीं लगवाऊंगा, हाउ विल आई प्रूव इट इन द कोर्ट की जी मैं वहां गया था? राइट। अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन, राइट। सो मैं वहां जाके हाजिरी लगाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं तो आ गया जी, सेलर आया नहीं, चलो जी, मैंने वहां रजिस्टर की, उसकी कॉपी ली अपने पास। घर आके सबसे पहला काम आप क्या करोगे, उसको लीगल नोटिस भेजोगे, भाई वो आया नहीं। ठीक है ना। और उसके अंदर लिखा हुआ अगर तू आएगा, देखो नॉर्मली जब भी आप एग्रीमेंट टू सेल करते हो, उसके अंदर नॉर्मली हमेशा लाइन होती है कि अगर तू रजिस्ट्री नहीं होगी, जितने मैंने तेरे को पैसे दिए हैं इसका डबल बयाना तो मेरे को। ये भी हो सकता है, और ये आजकल ये लिखा होता है कि नहीं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुझे चाहिए ही चाहिए इस प्रॉपर्टी। सो दैट इज व्हाई ही फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो उसके अंदर जब ये केस चलेगा, बायर ने ना जब कोर्ट में भी जाएगा, फ्रॉम डे वन ही हैज टू शो दैट आई एम रेडी एंड विलिंग टू गिव द प्रॉपर्टी। ये नहीं बोल सकता जी उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, अब मेरे पास पैसे हैं, देन योर राइट गोज ऑफ। तो रेडीनेस एंड विलीनेस इज द एसेंस ऑफ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। इसके बगैर आप नहीं जीत सकते। ठीक है। और इट हैज टू बी शोन फ्रॉम डे वन। ऑलराइट। सो नाउ लेट अस गो step by step to the important sections which I personally feel will be doing it right now. So let us open up here apps. All right. So now I'm telling you once for all. So when we start specifically fact section one, ठीक है, section one आप registration act का पकड़ लो, transfer property act का पढ़ लो। Earlier it was all these statutes were not applicable to Jammu and Kashmir, but अब आपको याद होना चाहिए, देखो it extends to whole of India। ये सबसे important चीज है, क्यों? बिकॉज देर वॉज अ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। आपने बेयर एक्ट खोला हुआ, उसके अंदर लिखा भी हुआ। ठीक है। सो 30/10/2019 में ये सारे इंडिया में एप्लीकेबल, पहले जम्मू कश्मीर में तो ये हर एक्ट में चेंज हो गया होगा, होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट होल ऑफ इंडिया, इसमें जम्मू में भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल, रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल, लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल, एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल। व्हाई? बिकॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नाउ वी कम टू द डेफिनेशन क्लॉज। याद रखना कि सेक्शन 2 नॉर्मली इन ऑल योर बेयर एक्ट्स, आप देखो एविडेंस एक्ट पकड़ लो, हिंदू लॉ पकड़ लो, कुछ पकड़ लो, मोस्टली डेफिनेशन क्लॉज आपका सेक्शन 2 ही होता है। सो पहले तो आपको पता चल गया सेक्शन 1 के अंदर की टेरिटोरियल एप्लीकेशन क्या है, टेरिटोरियल एप्लीकेशन क्या है। अब टेरिटोरियल एप्लीकेशन आपको पता चल गया कि रीऑर्गेनाइज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, 30/31/2019, section 1(2) specific relief act has been amended and the words except the state of Jammu Kashmir has been omitted, right? So now when I talk about the scope of this act, you should always remember this act is not exhaustive because you know there it is. So whenever I talk about scope of the act, you should always remember that act provides relief mainly in two types, right? One relief is compensatory and second is specific. Compensatory relief, it is mentioned in contract act that damages has to be paid, but in specific performance, in specific performance also, there are two reliefs. One is a general relief and one is a specific relief. जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, उसके अंदर जनरल रिलीफ दिया हुआ डैमेजेस, बट हम स्पेसिफिक की बात करेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बोला हुआ। उसी तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी इज आल्सो मेंशन्ड हियर। जनरल damages, general mode is having damages entered into contract act, and specific mode is specific performance has to be contract, right? So injunction is also one of the main, so injunction is one of the main heads of specific relief act। injunctions आप मिस नहीं कर सकते।
What is injunction? I will tell you when we discuss. I told you yesterday injunction means to stop. I even gave you an example of injunction yesterday in one of my lectures, right? So when I talk about injunctions, there is a very important case. You should write down the case name. The case name is, I'll write down the citation, 2007, volume 2, SCC 125. But a case name, I'm just telling you, you can hear it. The case name is Adhunik Steels Limited versus Odisha Management and Minerals Private Limited. So here the Supreme Court said injunction is one of the means of for specific performance of contract. So इन्होंने थोड़ा सा इसके अंदर define भी किया हुआ. I will read something for you in this judgment. It says injunction is a form of, so I'm just reading the judgment only for your reference. It says injunction is a form of a specific relief. It is an order of a court requiring a party either to do a specific act or acts or to refrain from doing a specific act or acts either for a limited period or without a limit of time. In relation to breach of contract, the proper remedy against a defendant who acts in breach of his obligation. Let me open this judgment for you. Let me open it. I'll share the screen with you. Let me open this judgment. All right. Bear with me. मैं पहले आपके साथ ये जजमेंट खोलता हूँ. ओके, इसको तो सुप्रीम कोर्ट केस 2007, 2007, volume 7, 2007, volume 7, and 125. Yeah. So I am sharing this judgment with you. Let us. Okay. So share screen. Yeah. So can you see the judgment, please? Yes, sir. What it says, it says section 36 to 39 injunction. What is this? It says injunction is a form of specific relief. It is an order of a court requiring a party either to do a specific act or refrain from doing a specific act. उसका नहीं रीड ना बच्चे यहाँ से पढ़ दो. तुम दोनों में से कोई भी पढ़ते हैं ये पैरा पढ़ लो शाबाश. Just go ahead. Injunction is a form of specific relief. It is an order of court requiring a party either to do a specific act or acts or to refrain from doing a specific act or acts either for limited period or without limit of time. In relation to breach of contract, the proper remedy against the defendant who acts in breach of his obligation under contract is either damages or specific relief. The two part principal varieties of specific relief
are degree of specific performance and injunction. The remedy for the non-performance of a duty are compensatory and specific. In the former, the court awards damages for breach of obligation. In the latter, it directs the party in default to do a forbear from doing the very thing Yes, which he very good. is bound to do Bound to or do or forbear forbear to from do. doing. Then I'll read specific relief is relief in specie. देखो, I told you from my first lecture. Supreme Court की judgment के अंदर also is mentioned, right? You see, judgment is written 2007, है ना? So specific relief is the relief in specie. It is a remedy which aims to the exact fulfillment of an obligation. Law of specific relief is said to be in a sense as part of law of procedure. For specific relief is a form of judicial redress. Thus, the Specific Relief Act 1963 purports to define and amend the law relating to certain kinds of specific relief obtained in civil court. It does not deal with remedies connected with compensatory reliefs except as incidental or to a limited extent. The power to grant injunction by way of specific is covered by Specific Relief Act 1963. Now, this judgment is of 2007. ठीक है ना? Amendment हुई है, but injunction is there, right? So I'm telling you that injunction is one of the most important aspects of specific relief act. इसका मैं आपको भी एक एग्जांपल भी बताऊं, ठीक है ना? So that your concept is clear. And अच्छा, so इसके अंदर एक और यार मैंने इसके अंदर हेड देखा है. Same चीज been repeated. So see, when I talk about injunction, right? So you always remember that injunction आप देखो, आपका घर के अंदर आपका आपका घर है. सो समबडी आपकी सपोज करो आपका वेकेंट प्लॉट है या आपके घर के अंदर समबडी इज नोइंगली कोई आपकी क्या कह रहे हैं द्वार तोड़ रहा है, कोई धक्के के फोर्सफुली वांट्स टू एंटर योर हाउस. आप इमीडिएटली क्या करोगे? भागोगे डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट के अंदर. आप सबसे पहले इंजंक्शन का सूट डालो कि दिस पर्सन शुड बी स्टॉप इमीडिएटली फ्रॉम एंटरिंग माय प्रॉपर्टी. सपोज करो आप टेनेंट हो, लैंडलॉर्ड बोला आपके एरिया में धक्के के साथ आ रहा है, आप इंजंक्शन लेके आओगे कोर्ट से. और ये जो है समरी रेमेडी उसी टाइम जब आप इंजंक्शन की एप्लीकेशन डालते हो, सूट डालते हो, उसी टाइम आपको टेम्परेरी इंजंक्शन लॉट हो जाती है कोर्ट से. ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की हम बात करते हैं. बिकॉज आप जब भी कोई सूट डालोगे, आप सूट ऑफ पार्टीशन डालोगे, सूट ऑफ डेक्लेरेशन डालोगे, ठीक है, इसके अंदर आप हमेशा इस सूट के साथ इंजंक्शन को बनाओगे. क्या? एप्लीकेशन सेपरेट बनेगी. आपने कभी देखा है? आपने जब सूट या मेरे ऑफिस में आके मुस्कान ने तो देखा हुआ. मुस्कान, यू रिमेम्बर ना ऑर्डर 39 है? Yes, sir. सो मोस्टली ऑल दीज केसेस यू सी, जो भी कोई केस फाइल करता है वो साथ के साथ स्टे की बात करेगा बाय मोड ऑफ ऑर्डर 39 की. नहीं यार, जब तक केस नहीं डिसाइड होता साला मेरे को तो स्टे चाहिए ना. सो दैट इज हाउ टू ऑर्डर 39 एप्लीकेशन. जैसे द मोमेंट यू बिकम जजेस, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू विल बी डिसाइडिंग दिस ऑर्डर 39. और इसके अंदर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखोगे. आपने आंखें बंद करके भी नहीं रिलीफ दे देना, ठीक है ना? यू हैव टू सी कि हाँ भी इसका बनता है. बिकॉज ये नॉर्मली एक्स पार्टी स्टे होता है, क्योंकि फर्स्ट डेट में दूसरी पार्टी तो आई नहीं, उसको उससे पहले आपने स्टे लेके जाना है. तो कोर्ट ऑल्सो हैव टू अप्लाई इस माइंड. तो वो आप जो नॉर्मली आप देखो, whenever these kind of injunctions are given, temporary injunction is given, ये एक stipulated टाइम के लिए दी होती है. बट सम पीपल डोंट नो, दे लिंगर इट एंड वो एंड रिजल्ट में फिर उनको डिसिप्लिनरी एक्शंस भी जजेस के अगेंस्ट पास हो जाता है हाई कोर्ट से, भी तुम लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाया, ठीक है ना? So all these things are very, very important. So injunction is very important. So when I talk about specific performance, here in this preview, I will be talking about permanent injunction. Temporary injunction is mentioned in CPC, but you should know the meaning of injunction. You should know what injunction is. So whenever you file any civil suit, declaration, partition, possession, whatever, every time main suit के साथ आपको order 39 की application लगती है. अगर आपने नहीं लगाई, it means basic error of a lawyer there, right? So mandatory injunction क्या होती है, permanent injunction क्या होती है, this all you should know in detail. That is why injunction is the most important part of specific relief act, and it is always n number of litigations, applications. In every day kitni lakhs of injunction applications courts में डलते होंगे. Just imagine. You don't have any figure and idea to it. So now moving further, let us now go to, अब हम बात करते हैं, चलो let us go to section. So definition clause, let us be doing the definition clause. So definition clause is in which section? Definition clause in section 2 of your Bail Act. So Bail Act apne paas, always keep it happy, right? So let us do now definition clause.
First thing is obligation. So obligation includes every duty enforceable by law. Okay. So ये duty should, it can be contractual also, ठीक है, or other duties, ठीक है, but याद रखना कि moral social duties are not part of this, they are out of the ambit of obligation, ठीक है. So 2A talks about obligation. So let us read clause 2B. Clause 2B talks about settlement. What is settlement? It means an instrument, you can read on your own. It means instrument other than a will or codicil as defined by Indian Succession Act. अब will क्या है और codicil क्या है, इसके बारे I will just give you 1 minute discussion on this. देखो will क्या होता है? So will is the last testamentary document. एक बंदे ने will का कोई रूल कोई लिखा नहीं हुआ कहाँ will described है, बट आपको याद होना चाहिए will is been mentioned in Indian Succession Act. Indian Succession Act unfortunately is not part of your courses. होना चाहिए, नहीं है ना आपके सिलेबस का पार्ट इंडियन सक्सेशन एक्ट, यस और नो? नो ना? They don't teach you Indian Succession Act in your universities, I guess. Yes, sir. Indian Succession Act is very important. इतनी litigation है will की, इतनी litigation है will की, जहां आपकी प्रॉपर्टी इतनी महंगी होगी है, किसी ने प्रॉपर्टी में बिल कर दी, पंगा पड़ना ही पड़ता है, और बंदों को people don't know about it. Very unfortunate. So will का मतलब क्या है? It can be registered or unregistered. ये नहीं कि it has to be registered only. ये बात डाल लो अपने दिमाग में permanently. But that will has to be last testamentary document. वो बंदा जो मर गया है ना, will कब आती है पिक्चर में? जब testator, who's a testator? Suppose करो A makes a will of his property for his children. So after the death, the will come into picture. And most of the litigation in civil suit court starts with the will. एक नाराज है, इसको क्यों मिल गई, मेरे को क्यों नहीं मिली, मेरे को कौन डिबार कर गया, ये इन्होंने उसको प्रेशर करके उससे विल लिखवाई है, उसकी मेंटल फैक्टर्स वर नॉट इंटैक्ट, सस्पिशियस सर्कमस्टांस है, वो बंदा तो बीमार था, विल कैसे कर सकता है? अगर उसने एक बच्चे को बेदखल किया था, उसका क्यों रीजन क्यों नहीं दिया? व्हाट इज दिस? दिस हैज बीन डन अंडर कोर्जन, दिस हैज बीन डन अंडर फ्रॉड, दिस हैज बीन डन अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस. Come the factors of contract here, right? So here Indian Succession Act comes into play, and there it is mentioned over here. So will क्या डॉक्यूमेंट आपको पता चल गया. कॉडिसल क्या है? कॉडिसल मैंने बताया उसी का डॉक्यूमेंट है, वो जब हम डिटेल करेंगे. अब प्रोबेट वगैरह, प्रोबेट भी कब होती है आई विल डिस्कस विद यू व्हेन प्रोबेट इज नीडेड. सो टेस्टामेंटरी स्टेटमेंट, लास्ट टेस्टामेंटरी डिक्लेरेशन ऑफ द टेस्टेट. और विल के अंदर जब भी कोर्ट्स डिसाइड करती हैं, दे डिसाइड एज इफ दे आर द टेस्टेटर, दे आर इन द सीट ऑफ अ टेस्टेटर. कि जज, जब आप लोग जज बनोगे विद गॉड्स ग्रेस, यू विल बी सिटिंग इन द सीट ऑफ अ टेस्टेटर. इमेजिन, मतलब एक प्रिजम्पशन आपने लेके चलनी कि आपने विल किया तो आप क्या सर्कमस्टांसेस को लेके चलो, ठीक है. सो कोर्ट्स कैन नॉट बी म्यूट स्पेक्टेटर्स, सो यू हैव टू सी कि हाँ अब विल कैसे प्रूव होती है. ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर दिया हुआ, जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट करेंगे. ये नहीं कि आपने विल को कर लिया और आप इसको प्रूव आपने करना थ्रू a testing witness करना. What are the modes of it? Written in Indian Succession Act. So whenever I talk about will, we read Indian Evidential Act along with Indian Succession. We will discuss when I do evidence video. तो अभी आपको समझ आ गया will और codicil क्या है, ठीक है. So उसमें लिखा हुआ है settlement means an instrument other than, मतलब हम will और codicil की बात नहीं कर रही, whereby the destination or devolution of successive interest, movable or immovable, disposed of or is agreed to be disposed of. So it says where the destiny. So iska so it means it in simple terms. What does it mean? It is a document under which property is either transferred or agreed to be transferred. Okay? It must come into existence during the lifetime of the settler. Okay? So always remember. So when I talk about settlement, it is between lifetime of the settler. Okay? So it is a document where property is either transferred or agreed to be transferred in that particular date. Now moving further, trust has the same meaning as Indian Trust Act 1982. अब Indian Trust Act क्या, ये आप you can read from chapter 9 of that act, ठीक है. So what is a trust? So trust means a trust is an obligation annexed to ownership of the property and arising out of confined, reposed in and accepted by the owner or declared accepted by him. ठीक है. So इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं. अब
person who reposes or declares the confidence. So who's the author of the trust? The person who reposes the confidence or declares the confidence is called the author of the trust. The person who accepts the confidence is called the trustee, and the person is whose benefit the trust is created is called the beneficiary. So trust आप देखो बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं, ठीक है ना. सो ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी क्या है, ठीक है, हु इज द बेनिफिशियरी, किसके अल्टीमेटली बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट बनाया गया, उसको एक अमाउंट जाएगा, उसको मेंटेनेंस के लिए जाएगा. सो दिस ऑल इज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन ट्रस्ट. अब what is trustee, this is also defined in section 2D. Every person holding property in trust. ठीक है. So इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ. Let us assume, so let us, this example you can write also, right? बड़ा simple example. Z bequeaths land to A, that he will pay annuity of 1,000 rupees, 1,000 to H, his wife. A accepts the bequest. So A is a trustee within the meaning of this act. So here A is the trustee within the meaning of the act. So basically trust, बंदा कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टीज को सेल कर रहा हूँ, एंड ही मेक श्योर कि उसमें से ये 1,000 रुपीज मेरी वाइफ को एज अ मेंटेनेंस, वो एक्सेप्ट कर गया. तो ऑब्वियसली दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ ट्रस्ट. हियर हु इज द बेनिफिशियरी, हिज वाइफ इज द बेनिफिशियरी. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट. ठीक है. मूविंग फर्दर, so we have section 3. See, normally every Bear Act will have a savings clause. ठीक है. So कहता है sections, yeah. So section 3 you will say, except all otherwise provided herein, nothing in this act shall be deemed to deprive any person of any right to relief other than specific performance which he may have under any contract, or to affect the operation of Indian Registration Act on documents. So what does this stipulate? It stipulates that the act shall not deprive any person of any right to relief other than specific performance which he may have under contract. ठीक है ना. So this factor you have to remember. ठीक है. So basically specific performance is an additional remedy besides contract. Now this has been also held in Amendment Act of 2018. पहले होता था डैमेजेस दे दिया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दिया. अब अमेंडमेंट बोलती है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी उसको अलाउ करोगे, प्लस यू विल आल्सो गिवन damages, right? So this is as it is an additional remedy, and this is mentioned by way of section 21 of the Specific Relief Act. Clear? And इसका clause B is very important. It says to affect the operation of Indian Registration Act on documents. So clause B इसका बोलता है that it will not affect it will not affect Indian operation of Indian Registration Act, especially when we talk about section 17 and 49 of Indian Registration Act. It will continue to operate. So what is section 17 and 49 of the Registration Act? This today you will go through and update me on this on the next lecture or for your reference. Now let us come to section 4. Section 4 says specific relief to be granted only for enforcing individual civil rights and not enforcing penal laws. Very simple. So it says that it is specifically can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights. Okay. So civil rights क्या होते हैं? अब देखो, there is one we also got cases of civil nature. Cases of civil nature कहाँ described है? वो section 9 CPC के अंदर described है. तो आपको पता चल गया कि Specific Relief Act is applicable where the cases are of civil nature. Or when I talk about this, there are in the so after section 4 we come to section 5. Now today, whenever
chapter 2, now this is part 2 of the specific leaf act. Now here you have to remember that we are talking about recovery of property. So when I see, it is the heading also, when I talk about recovery of property, you should remember recovery of property is from section 5 to 8. So here we will do recovery of suit of immovable property also, and recovery of suit of movable property also. Now, before moving further, we should know we'll be doing what is the meaning of possession. We should also know what is the meaning of immovable property. Now, immovable property, I have already discussed in one of my lectures when I was discussing, Transfer Property Act also. So whenever I talk about immovable property, today, go and read section. Now, immovable property is not defined. See how you find the definition of a particular word. First, you will, now I am reading specifically fact. They mention about immovable property. I will see the definition clause. अभी हमने definition clause किया, immovable property is not defined. Then what will you do? You will go to General Clauses Act. उसके अंदर you will find a definition. Or General Clauses Act, you will see immovable property is also defined in other statutes. What are the other statutes? General Clauses Act is there. Then immovable property is also defined in Registration Act. So Registration Act definition of immovable property, it is the best. It is the most important definition of immovable property. So you also read immovable property definition. You should know what are the examples of immovable property, because these are very basics and it will help you in Transfer Property Act also, right? So today it is your homework to read about immovable property, to read about possession, to read about definition of immovable property, especially mentioned in Indian Registration Act, along with General Property. This you will read, and then in my next lecture, we will move forward and we will discuss how the recovery is possible. So it's for today, and clear? Sure. Now I'm going to end the session, and yeah. So okay then, we'll resume on the next session. Today, kindly go through the meaning of immovable property as defined in Indian Registration Act. That is a very, very important definition, and that will not only help you in Specific Relief Act, it will also help you in Transfer Property Act. And also read about possession, corpus kya hota hai, animus kya hota hai, and kindly go through it and update me on the next lecture. Okay then, thanks.